What about the couscous? It's good like this? This couscous, couscous hota hai. Hello, Mr. Shah Rukh Khan. I really enjoy your movies. और मुझे आपका एक गाना याद आ रहा है. जैसे मैं यहाँ कुछ खा रहा हूँ. एल्सी ने मुझे पूछा ये कुछ अच्छा है. तो मुझे याद आया कुछ होता है. Yes, Elsie, it's delicious. Actually, it's really delicious, Elsie. Ooh, got onions and all kinds of stuff in there. Look at that. I tell you, Brazilians are quasi-Indians, and Indians are quasi-Brazilians. Lots of similarities between Indians and Brazilians. Indians और Brazilians में बहुत सारी similarities हैं. इसे तो पंजाबी. Indians ਦੇ Brazilians ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ similarities ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ मैं हिंदी बोलूँ. Maybe a little bit of both, because मैं एलसी से कह रहा था कि मैं आज से वीडियोस में अंग्रेज़ी बोलूँगा, एलसी पोर्चुगीज़ बोलेगी और अंग्रेज़ी के साथ मैं हिंदी बोलूँगा क्योंकि मुझे हिंदी बोलनी आती है और मैं पंजाबी हूँ. सो क्योंकि मैं पंजाबी हैगा मैं पंजाबी भी नाल बोलांगा. सो मैनूं लगदा ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਧਣਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਰਾਈਟ. ਅਤੇ ਐਲਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ, ਸੋ ਫॉर ਹਰ ਟੂ ਸਪੀਕ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, 4 ਭਾਸ਼ਾ. ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ. Have you ever put milk powder on your fruit? Well, let me tell you, if you haven't, try it. It is absolutely delicious. Boa ideia para colocar na compostagem. मुझे शक है कि इसको अमरूद कहते हैं. जब मैं छोटा बच्चा होता था 8-9 साल का इंडिया में, तो मैं शिमला में पढ़ता होता था और जब भी मुझे छुट्टियां होती थी मैं अपने ग्रैंडफादर के फार्म पे जाता था और वहाँ 1 या 2 या 3 ऐसे पेड़ होते थे और हम वहाँ से अमरूद खाते थे. मुझे शक है इसका नाम अमरूद है. मुझे इतना पसंद है इसका टेस्ट. और मुझे हिंदी बोली काफ़ी देर हो गई है, सो मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, पर
थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कई लोगों ने मुझे बोला कि तू अपने चैनल पे हिंदी में बात करा कर, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो आपका फिर चैनल देखेंगे। सो देखो शायद हम करें। मुझे बहुत याद आ रहा है कि जब मैं हिंदुस्तान में छोटा बच्चा होता था तो मेरी माँ ऐसे अंडे बनाया करती थी, और इसमें प्याज भी जाते थे, उसमें कुछ ग्रीन भी जाता था, टमाटर भी जाते थे, और ऑफ कोर्स चिली पेपर्स भी। और यहाँ ब्राज़ील में लोग काफ़ी कुछ जैसे इंडिया में होता है। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से, लुक एट दैट। सो जैसे मैं कह रहा था, यहाँ ब्राज़ील में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन ब्राज़ील एंड हमारा इंडिया। यहाँ के लोग भी बिल्कुल जैसे इंडियंस होते हैं, बस भाषा अलग है। इनका कल्चर भी हमारे जैसा है, बहुत फैमिली वैल्यूज़, इनको म्यूज़िक पसंद है, खाना पीना पसंद है, डांसिंग पसंद है। बस थोड़े से differences हैं, but I see a lot of similarities between Brazilians and Indians. And oftentimes I tell Elsie, मैं Elsie को बहुत बारी कहता हूँ, जैसा वो ad है इंडिया में for tourism, Elsie, this is just like incredible India. Your seat. Colocar essas novas cascas de verdura. Tem casca de ovos aqui também. Ó, esmagado, né? E eu quero pegar uma quantidade de terra que já está pronta para fertilizar o solo, para plantar umas sementes. O mamão e a pimenta que nós usamos hoje, eu vou plantar a semente. I'm going to show you something, guys. So Elsie is about to put that stuff in the compost, but right here there's a hen sitting on her eggs. Check this out. Hi mama, hi mama, don't worry, I'm not going to scare you. She's perfectly still. Right? Oh, cool. All right, Elsie. Look at that. सो कंपोस्टिंग तुसीं तो सुने होना कंपोस्टिंग की होंदा, पर बेसिकली जो भी खाण पीण दा समान होंदा ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, all the organic stuff, organic trash ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ, ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ really a good way to recycle organic stuff. मेरी सारी उम्र मैं शहरों में रहा हूँ, और अब मेरी उम्र 61 की उम्र है मेरी, और हमें ब्राज़ील आए 1.5 साल हो गया, 15-16 महीने, और ऐसी टाइप की ज़िंदगी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही जी रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर स्पेशली, उनके पास एक फार्म होती थी हरियाणा में, और मेरे डैड बहुत मुझे कहते होते थे कि तू यहाँ आके मेरे साथ फार्मिंग कर, पर मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे वो अच्छा लगेगा।
पर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कहने के लिए कि मुझे ऐसा टाइप ऑफ लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पीसफुल, you know, good for your health, good for your soul, good for your heart. You're going to take that with you back? Yes, to put for the seeds. Oh, that's for planting at the yes, back. because this is already Oh, compost. this is amazing, yeah. Yes, for all the leaves and ashes. It's Oh, perfect totally. to use. Totally. So this is papaya seeds, and this is a pepper that doesn't burn. It just has the smell. It's amazing to put in salads, in fish, and it's very good for you. You're going to plant that? Yes, I'm All gonna right. plant both. Let me tell you, if you guys haven't had jackfruit, it is sugar sweet. It is absolutely delicious. And we've got all kinds of jackfruits falling down because they're ripe. Look how delicious. Let me show you. So आप तो खैर जानते ही होंगे कि इंडिया में भी जैकफ्रूट मिलता है, पर यहाँ ब्राज़ील का जैकफ्रूट कुछ और ही टाइप का है। इतना मीठा है ये जैकफ्रूट। तो जैकफ्रूट तो खैर इंडिया 'ਚ भी मिलता है, पर इत्थों का जो जैकफ्रूट है ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੈਕਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੈਕਫਰੂਟ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਕਫਰੂਟ ਦੇ ਪੇੜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਫਰੂਟ ਦਾ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦੀ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ।